दासी करणेषु मन्त्री भोजेषु माता शयनेषु रम्भा रूपे च लक्ष्मी क्षमया धरित्री नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं KLE वेणु ध्वनि 90.4 FM। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे स्वरा और स्त्री ध्वनि सीरीज 2 में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूं। यहां पर हम आपको सुनाते हैं आवाज बुलंद महिलाओं की। दोस्तों, हर बार की तरह हमारे साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग महिला है जिन्होंने बहुत लंबी जर्नी तय करके अपने जिंदगी के सारे सपने पूरे किए हैं और आगे भी करने वाली है। आज हमारे साथ है एक ऐसी पर्सनालिटी जो न सिर्फ कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक मजबूत पहचान रखती है बल्कि क्रिएटिव वर्ल्ड में भी अपनी छाप छोड़ चुकी है। कैंडिडा एंड्रेडे हलगेकर एक सीजन्ड HR प्रोफेशनल है जो पिछले 16 साल से एक्सेंचर में काम कर रही है। फिलहाल ग्लोबल डाइवर्सिटी और इंक्लूजन इनिशिएटिव्स को लीड कर रही है। खासकर एक्सेसिबिलिटी और डिसेबिलिटी इंक्लूजन पर वो फोकस करती है। लेकिन उनकी जर्नी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। कैंडिडा एक ट्रेन्ड एक्टर, थिएटर आर्टिस्ट और मॉडल भी है। उन्होंने मिस बैंगलोर फोटोजेनिक 2012 में जीता था, मिसेस कर्नाटका 2020 में और मिसेस साउथ इंडिया 2020 में, और उसी के साथ मिसेस इंडिया ग्लोबल 2020 की वो फाइनलिस्ट भी रह चुकी है। कैंडिडा नेविया, सफोला, ह्यूंडई इयॉन, बिग बाजार, रेनबो हॉस्पिटल्स और कई अन्य ब्रांड्स के लिए एड्स और प्रिंट कैंपेन का भी हिस्सा रह चुकी है। इसके अलावा वो डेडिकेटेड फैमिली पर्सन है। अपने हस्बैंड अनिकेत हलगेकर के साथ मिलकर अनिका और अध्ययन, जो उनके 2 बच्चे हैं, उनकी परवरिश भी कर रही है। तो आइए मिलते हैं कैंडिडा से और जानते हैं उनकी ये इंस्पायरिंग जर्नी। वेलकम कैंडिडा, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच। कैंडिडा, सबसे पहला सवाल आता है, यू आर HR प्रोफेशनल और उसी के साथ में आपने काफी सारे ब्यूटी पेजेंट्स में भी पार्टिसिपेट किया। तो ये दोनों ही बहुत अलग अलग फील्ड्स है। तो हाउ डू यू बैलेंस बोथ द थिंग्स? और एक्टिंग भी आप करते हैं, तो ये सफर का बैलेंस आप कैसे बनाते हैं? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। और आई थिंक ये सब डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हो। आप प्रायोरिटीज पे फोकस करना चाहिए। मुझे जो वर्कआउट हुआ है इज ऑल अबाउट कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है। बैकवर्ड प्लानिंग करती हूँ मैं। अगर आज मैं यहाँ पे हूँ तो मैंने बहुत बैकवर्ड प्लानिंग किया है कि ओके ये करना है। तो आई थिंक सपोर्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरी जो फैमिली है मुझे बहुत सपोर्ट करती है। तो इफ एट ऑल मुझे वर्क के लिए ट्रैवल करना पड़ता है तो बच्चों का स्कूल वगैरह मेरी फैमिली मैनेज करती है। तो आई थिंक एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, मेरे ऑफिस में भी मेरे जो बॉस है वो भी बहुत सपोर्टिव है। अगर उनको पता है कि ओके मुझे मेरा ये पैशन है और मुझे ट्रैवल करना है फॉर अ मॉडलिंग असाइनमेंट और अ फोटो शूट, सो वो भी सपोर्ट करते हैं। ओके आप छुट्टी ले सकते हो, हम बैकफिल करते हो आपके लिए। सो आई थिंक इट्स अ जॉइंट एफर्ट, फैमिली, माई कलीग्स, and I think it's my passion and people around me. तो वो positive mindset is very important. अगर कुछ करना है तो you have to make things work. I think that's the only way. Otherwise, what happens is you tend to get worked out कि ये भी करना है. But if you like something, I think manage हो जाता है. अच्छा, यानी where there is a will, there is a way. Exactly. ಏನಾಗಲಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗುನಿ ಬಯಸಿದ್ದಿಲ್ಲ ಸಿಗದು ಬಾಳಲಿ ಬಯಸಿದ್ದಿಲ್ಲ ಸಿಗದು ಬಾಳಲಿ ಓ ನನ್ನಾಣೆ ನನ್ನ ಮಾತು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ ಓ ನನ್ನಾಣೆ ನನ್ನ ಮಾತು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ ಏನಾಗಲಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗುನಿ ಬಯಸಿದ್ದಿಲ್ಲ ಸಿಗದು ಬಾಳಲಿ ಬಯಸಿದ್ದಿಲ್ಲ ಸಿಗದು ಬಾಳಲಿ ಓ ನನ್ನಾಣೆ ನನ್ನ ಮಾತು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ
कैंडिड आई वुड लाइक टू नो अबाउट आपका थोड़ा बैकग्राउंड, आपका बचपन कैसा रहा, एजुकेशन कैसा रहा और कैसे लाइफ आपकी आगे बढ़ी. आई वुड लाइक टू नो दैट. Sure. So, as you are aware, I'm born and brought up in Khanapur. So that's 25 kilometers Belgaum se. And so मेरे parents बचपन से ही, I've watched them grow. They are musicians. My dad is a guitarist. Achha. Is a anchor. He's a pianist. My mom is also a guitarist and a singer. Okay. तो मैं बचपन से उनको देखती आई हूँ स्टेज पे परफॉर्म. मैं उनके शोज में जाती थी एंड आई थिंक वो तभी से मुझे वो कॉन्फिडेंस मिला क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स को देख रही थी स्टेज पे. तो समवेयर मेरे भी मन में था कि सम डे इन सम फॉर्म ऑफ आर्ट इवन आई विल अचीव समथिंग. तो आई थिंक मेरा बचपन बहुत मजेदार था. अच्छा. मैं बहुत घूमती थी मेरे पेरेंट्स के साथ क्योंकि आउट ऑफ बेलगाम बहुत शोज करते थे. तो हम लोग बहुत वी यूज्ड टू मीट अ लॉट ऑफ पीपल. आई हैड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स बिकॉज म्यूजिशियंस एंड उनके बच्चे. तो आई थिंक मेरा बचपन बहुत अच्छा था. मेरा स्कूलिंग भी खानापुर में ही हुआ था. पोस्ट 10th स्टैंडर्ड में बेलगाम मूव हुई थी कॉलेज के लिए. अच्छा. एंड उसके बाद आई थिंक कॉलेज के बाद माई फर्स्ट जॉब इन एक्सेंचर आई मूव टू बैंगलोर. ओके. आप 16 साल से कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर रही है. इस जर्नी का सबसे बड़ा सीखने वाला पल कौन सा था? व्हाट डिड यू लर्न? I think the most important thing I've learned is people because work comes and goes, but लोग जो है वो हमेशा you have to work with them, you have to उनको जानना पड़ता है, उनको समझना पड़ता है, उनको सपोर्ट करना पड़ता है. And I think in my 16 years journey ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुझे as a mentor मुझे सपोर्ट किए हैं और जो मैं आज हूँ उनकी वजह से है. Because I strongly believe कि अगर you want to move forward, you have to help people move forward. Yes. And I think that has helped me a lot because it is vice versa. Even I have helped people in the journey and they have helped me and together I think we have achieved success. That's so nice. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಪ್ರತಾಪ್ ಲಿಂಗಯ್ಯ, ರಾಜ್ಯ NSS ಅಧಿಕಾರಿ, ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ. KLE ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ವೇಣುಧ್ವನಿ ಏನು ಸುಮಾರು 8 ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಆರೋಗ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಶಿಕ್ಷಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪರಿಸರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಜಾಗೃತಿಯನ್ನ ಮೂಡಿಸುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನ ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಏನು ಇವತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ತಾವು ಇರುವಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ತಾವು ಓದ್ತಾ ಇರೋಂತ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರಿಸರವನ್ನ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಗಳನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನ, ಏನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತದ ಒಂದು ಕನಸನ್ನ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಒಂದು ಕನಸನ್ನ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಪ್ರತಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ತಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ತಾವು ಈ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ NSS ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕ್ಯಾಂಪ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಈ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೀಡಬೇಕು. ಇದನ್ನ ನೀಡಿದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಪರಿಸರವನ್ನ ನಾವು ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಒಂದು ಕನಸು ಕೂಡ ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆ ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿತ್ತು. ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆರೋಗ್ಯವೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಡೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಏನು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸಿ ಈ ಒಂದು KLE ವೇಣುಧ್ವನಿ KLE ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಹಕಾರ, ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಅಂತ ನಾನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಧ್ವನಿ ಧ್ವನಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿ, ಕೇಳಿ ಕನಸು ನನಸದ ವೇಣು ಧ್ವನಿ, ವೇಣು ಧ್ವನಿ. आप डाइवर्सिटी और इंक्लूजन के लिए काम कर रही है, तो वो समाज में क्या बदलाव ला रहा है? और इवन आई वांट टू नो अबाउट योर वर्क इन एक्सेंचर. श्योर. So I think current scenario में जो है
inclusion and diversity is playing a very big role. जहाँ पे we are not just focusing on equal rights. So I'm specifically talking about disability inclusion, जहाँ पे हम people with disabilities, जहाँ पे people who have disabilities related to vision, mobility. So we treat them equal. That is one important thing. जहाँ पे in a corporate there are many things जो matter करते हैं, like your promotions, your compensation and benefits. So once you treat people with disabilities or for that matter any community equal, you are giving them that respect. उनको वो confidence दे रहे हैं. You're valuing them. So obviously once you value your people, that's how your people will perform for the organization. So I think inclusion or diversity is a very important aspect, or I think all companies should focus on it, not just the IT sector, or it can be even media or anything, right? So yeah. आपने मिस बैंगलोर फोटोजेनिक और मिसेस कर्नाटका और मिसेस साउथ इंडिया जीतने के बाद लाइफ में क्या चेंजेस आए? मतलब ब्यूटी पेजेंट्स जिसमें आपने परफॉर्म किया, उसके बाद व्हाट चेंज्ड इन योर लाइफ, या हाउ these competitions change your life? So there were no major changes as such, क्योंकि at the end I'm the same person. But when you look at opportunities जो है, मुझे बहुत सारे platforms मिले जहाँ पे मुझे guest speaker, नहीं तो they called me as a person to take trainings for budding students, which I really liked because I got a good opportunity to talk to students and people who are interested in that field. That is one. So I think it built up my confidence. One, it helped me make a best version of myself, and third is a good way where I can motivate people. So yeah, I think those were the three things that helped me after winning pageants. एक्टिंग और थिएटर का शौक कैसे शुरू हुआ और पहली परफॉर्मेंस का क्या एक्सपीरियंस था? तो जब से मैं बहुत बॉलीवुड टाइप की थी. मैं मेरे मम्मी के साथ हमेशा मूवीज देखती थी, एंड इनफैक्ट आई थिंक बैक देन संडेज शाम को कन्नड़ा मूवीज दिखाते थे, तो मुझे इतना आता नहीं था, बट मैं बैठ के देखती थी. तो आई थिंक तब से मुझे बहुत इंटरेस्ट था मूवीज देखने का. और माई फेवरेट पास टाइम बैक देन वॉज टू enact in front of the mirror. और मेरी ऑडियंस हमेशा मेरी दादी रहती थी. मैं कुछ भी करूँ वो मेरी ऑडियंस हमेशा मुझे मोटिवेट करती थी, क्लैप करती थी. तो हमेशा मैं डिफरेंट अटायर्स ट्राई करती थी और कुछ डायलॉग बोलती थी मिरर में, एंड माई दादी एज यूजुअल हमेशा मोटिवेट करती थी. सो आई थिंक बैक देन मुझे शौक था. स्कूल में बहुत सारे स्किट्स वगैरह करती थी, स्टोरी टेलिंग सेशंस, एंड आई थिंक मेरा ब्रेक थ्रू जो था वॉज इन बैंगलोर. आई हैड done a acting workshop जहाँ पे me and my husband, so that was I think the first professional theatre play जो मैंने किया था. जहाँ पे it was like a ticket show, the typical setup of a theatre. So it was a comedy play called Corribungus, and fortunately I did a first professional play with my husband, and both of us did it on the stage, and I guess we got a lot of applause from the audience, and I think that was it, as in my first show, which I remember very fondly. अच्छा, तो that brings me to the next question. अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताइए. आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, how the family plays an important role in your life. True. So I think, everyone in the family, especially, most important is we value each other. My husband likes to work out. I value that. He knows, I like to do things apart from work. Like, I have a passion for, going for such talks. I used to participate in a lot of pageants. I used to do print ads. So somewhere, I think you have to have that bonding, not just with your husband, but even my father-in-law for that matter. He is around. जब भी मैं घर पे नहीं रहती हूँ, मेरे बच्चों का ख्याल रखते हैं. मैं जो fruits देती हूँ उनको याद है. मतलब it's like even if I'm not there, he will take my place. Yes. And my parents too. Like, my parents are filling in for me. Say for example, I had to travel for work, so my mom is there, to take it, because I lost my mother-in-law 7 years back. So my parents fill in for me. My father-in-law fills in for me. When my husband is traveling, all of us fill in for him. So, and my kids also are very, they are used to it, that okay, mama just is not at home, she has other stuff to do as well. Same with baba. तो मेरे बच्चों को भी they are also adapted to that, and
they are also supportive. At times, my daughter खुद जाके किचन में जाके खुद अपना प्लेट बना के खाती है. तो I think it's very important कि all of you stay together as a family and value each other's hobbies and passion and needs. Yes. And I think that is something that I feel is I'm blessed because I'm getting to do everything that I want to do. Yeah. ರೇಡಿಯೋ ಯಾವತ್ತೂ ಅದು ಯಾವುದೇ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಆವರಣಗಳು, ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನರಿಗೆ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಆವರಣವೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಆದರೂ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಾತಾಡಿದರೆ ಅವಳು ಮಾತಾಡಿದಳು ಅನ್ನೋದೇ ಅವಳ ಅಪರಾಧ ಅನ್ನೋ ತರ ನೋಡುವಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಕೀಳು ಮಟ್ಟದ ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಒಂದು ಪುರುಷ ಠೇಂಕಾರದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆದದ್ದು ಅವ್ರದ್ದು ಬಿಡಿ, ಆದ್ರೆ ನೀವು ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಎಂಥ ಒಂದು ಅಸಮಾನತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣನ್ನ ಕೇವಲ ಒಂದು ತೊತ್ತಿನ ಒಂದು ವಸ್ತುವಾಗಿ, ದಾಸಿಯಂತೆ, ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವಸ್ತುವಂತೆ ನೋಡುವಂತಹ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಇರುವಂತಹ ಪರಿಪಾಠ ಇನ್ನೂ ಇದ್ದಾಗ ಇಂಥ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ವೇದಿಕೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. ಅದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಸಮಾನತೆಯ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯವನ್ನ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವೇಣು ಧ್ವನಿ ಮೂಲಕ ನೀವು ಈ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯ. ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ, ಅದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋದು ಮುಖ್ಯ. ಈಗ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ SMS ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಬೇರೆ. ಅದು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಗುಸುಗುಸು ಆದಂಗೆ ಅದಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೆದುರಿಗೆ ಅಂತರಂಗ ಬಹಿರಂಗ ಬೇರೆ ಆಗದಂತಹ ಒಂದು ಆವರಣ ಇದು ರೇಡಿಯೋ ಅನ್ನೋದು. ಹೀಗಾಗಿ ರೇಡಿಯೋ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದು. ರೇಡಿಯೋದಿಂದನೇ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಮಾತುಗಳನ್ನ ರೇಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ, ಊರಿನ ಚೌಕಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರ್ದೋ ಒಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೋ ಇತ್ತು, ಆ ರೇಡಿಯೋ ಸುತ್ತ ನೂರಾರು ಜನ ಕೇಳಿ ಮಾಡಿ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಆಂದೋಲನದ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಎಲ್ಲಾ ಮಹತ್ವದ ಗಾಯಕರು ಮೊದಲು ಹಾಡಿದ್ದು ರೇಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಯಾರೇ ಇರಲಿ, ಅವರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಮನ್ಸೂರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಮೀರ್ ಖಾನ್ ಸಾಹೇಬರು ಇರ್ಬೋದು, ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾ ಖಾನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರ ನಿಜವಾದ ಧ್ವನಿ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದು ರೇಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಹೀಗಾಗಿ ರೇಡಿಯೋ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನನ್ನು ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ತಲುಪುವ, ಬಡವ ಬಲ್ಲಿದ ಎನ್ನುವ ಭೇದ ಮಾಡದೆ, ನೀವೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಯಾವ ಲಿಂಗ ಭೇದ, ಜಾತಿ ಭೇದ, ಧರ್ಮ ಭೇದ ಮಾಡದೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ತಲುಪುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮ. ಹೀಗಾಗಿ ರೇಡಿಯೋದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಬಹಳ ಬಲವಾದದ್ದು. ಆದರೆ ಅದನ್ನ ಬಳಕೆ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು. ರೇಡಿಯೋ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ವಿಚಾರ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿತ್ತರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಕೆಲವು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಅದರ ದುರ್ಬಳಕೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಸಮಾನತೆ, ಸಮತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜೆಯ ಹಕ್ಕು ಬಾಧ್ಯತೆ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಆವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸೋದು ರೇಡಿಯೋದ ಕೆಲಸ. अब तक के मॉडलिंग असाइनमेंट में आपका फेवरेट प्रोजेक्ट कौन सा था? ये मेरा पहला प्रिंट एड था, सबसे स्पेशल बिकॉज पहले दैट वाज माय फर्स्ट प्रिंट एड एंड ये था प्रोविडेंट रियल एस्टेट कंपनी के लिए, जहां पे मेरे होर्डिंग्स लगे थे फुल बैंगलोर में, बिग ह्यूज होर्डिंग्स ऑफ मी इन द पूल, और उसका टैगलाइन था यू डिजर्व मोर. So the tagline itself was like, that was my first print ad and the tagline was you deserve more. So I mean and that was something that मैंने पहले किया नहीं था. एंड जब मैं शूट के लिए गई थी, द एक्सपीरियंस, मतलब पूल में, एंड यू हैव अ मेकअप आर्टिस्ट, यू हैव the cameraman, and you had so many people to help you, get that perfect shot. My husband was there back then, we were not married, and he was, helping me get the right shot, the lighting. I think that was my favorite one because it was my first, like I said, and the hoardings were like so huge all over Bangalore, and I had people come and tell me, oh, I saw you on that hoarding. And so yeah, I think that was a very special one. एक वर्किंग वुमेन और माँ होने के नाते आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या रही? सबसे बड़ी स्ट्रेंथ, I think it's that clear communication with my life partner, like my husband. I think that is my strength because if there's something that I need help or I need him to pitch in, it's very clear कि okay, I'm doing this, you please help me with this. So I think that clear communication is a strength, I feel. Okay. अगर आपको किसी एक चीज को अपनी पहचान बतानी हो, HR लीडर, मॉडल, एक्टर या मदर, तो वो क्या हो सकती है? I think I'll go for mother because as a mother, my mother teaches you love, strength, leadership, and I think if you have all these three qualities, you can master any other role.
so it's mother. Yeah. Okay, that is very true. And once a mother is always a mother. True. उसके साथ में बाकी सारे रोल्स ऐड होते जाते हैं, True. बट ये रोल हमेशा हमेशा रहता है. अगर आपकी लाइफ पर एक फिल्म बनती तो उसका टाइटल क्या होता? Interesting. I think Unstoppable. अरे वाह, वेरी नाइस. वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू नो कि जब यू वर ट्राइंग एंड डूइंग ऑल दीज थिंग्स, आपको कभी डर लगा या कोई मुश्किल समय आया तो अपने आप को कैसे हैंडल किया? So I think हमेशा मेरे पास ऐसे पॉजिटिव पीपल थे, like my husband back then, my parents, my in-laws, my boss, my colleagues at work. I mean, कभी ऐसे रेजिस्टेंस नहीं मिला किसी से कि तुम कुछ गलत कर रही हो, कि ऑफिस में रह के तुम साइड में अपना पैशन परस्यू कर रही हो. आई थिंक ये रेजिस्टेंस मुझे टच वुड कभी नहीं मिला. बट यस, एट टाइम्स जब मैं पेजेंट्स में थी, मिस बैंगलोर में थी, बहुत टफ कंपटीशन था. और इट वाज अ फेज जहां पे मैं हाफ डे ऑफिस जाती थी और हाफ डे रिहर्सल्स. एंड कौन से ऑफिस में ऐसे अलाउ करते हैं, बट माई बॉस वॉज वेरी सपोर्टिव. उन्होंने बोला कि डोंट वरी, तुम हाफ डे ऑफिस आ जाओ, हाफ डे रिहर्सल्स कर लो, विल मैनेज समहाउ. तो वो फेज था थोड़ा, बिकॉज आई हैड टू कैच अप विथ वर्क, आई हैड टू कैच अप विथ रिहर्सल्स. इट वाज वेरी हेक्टिक एंड लाइक आई सेड, टफ कॉम्पिटिशन था. इट वाज माई फर्स्ट पेजेंट. We had to do different things like talent rounds the every day, workouts the. So I think that phase was, I had to go from, I used to stay in one area in Bangalore, और मेरा रिहर्सल था एक एरिया में, ऑफिस था एक एरिया में. और आपको पता होगा बैंगलोर में इट्स नॉट सो इजी टू ट्रैवल, द ट्रैफिक एंड, बट समहाउ इट वेंट थ्रू एंड आई वन दैट टाइटल एज वेल. तो आई थिंक इट्स ऑल इन द हेड कि रेजिस्टेंस सर में रहता है कि हमेशा ये नेगेटिव है, ये नहीं करना है. आई थिंक लाइक यू सेड, देयर इज अ विल, देयर इज अ वे, यू कैन मेक इट पॉसिबल एनीवेज. दैट्स ट्रू. आपकी ब्यूटी पेजेंट की जर्नी के बारे में थोड़ा बहुत बताइए, क्योंकि आई एम श्योर हमारे शहर में बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो एस्पायरिंग है और इस फील्ड में आगे जाना चाहती है, तो उनको आप कैसे गाइड करोगे? सो आई थिंक फर्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, आई थिंक दिस back then, जब मैं I was small, I was in school back then, वो confidence level नहीं था मेरा. I used to get scared to even deliver a speech. But eventually, I think, I mastered it by, once I was made the master of ceremony office में. और मुझे audition भी नहीं देना था क्योंकि मैं बहुत conscious थी. But the person who was selecting there बोला कि don't worry, I don't want your audition also, I know you can do it, you just go for it. तो इतना डर था मुझ में कि I can't do it. But the day जब मैं एंकर करने के लिए गई थी, the event was a super success, and that day I realized कि we are just underestimating ourselves. If you want to do something, you can do it. Try, at least give it a try. You may fall, you may do wrong things, but you have an opportunity to at least improve. So even when it came to beauty pageants, I think, I had the height but maybe I was too slim, and my husband helped me, to do the workout so that, I was presentable for the pageant. So I think you just need that passion. If you are interested, you build your confidence, you build your personality, make a best version of yourself and just go there. Right? The rest will follow. Yeah, that's true. आखिर में वो कौन सा एक मंत्र है जो आपको हमेशा मोटिवेट करता है? So I feel keep going, keep growing. चलते रहो और सिखाते रहो is something that I feel has been my mantra. Just keep going. I mean, go with the flow. I have a lot of, sometimes friends ask me, I have this problem, I have that. How do I deal with it? So I just say go with the flow. I mean, things will fall in place. Like for example, जब मैं my first maternity, when I was carrying Anika, तो मैं सोच, मेरा जॉब था जहाँ पे मुझे clock in करना था, had to be in office 5 days a week. Okay. And I was wondering how will I manage, after. And I was like, okay, just go with the flow. And you won't believe, I was in my 8th month, my boss told me, you don't worry. You go to Belgaum. I was in Bangalore because my office is in Bangalore. You don't worry. You go to Bangalore. You go to Belgaum, and you work from home for that month till your delivery, and we'll see after that. So then I stopped bothering. I mean, we were busy with Anika when she was born and all. And then came time जहाँ पे मुझे office join करना था.
एंड देन आई वाज लाइक ओके अभी क्या करें, बिकॉज आई हैड अ जॉब जहाँ पे मुझे रोज ऑफिस जाना है, तो अनिका छोटी थी. So it was like my boss like don't worry, and they helped me get another role. They created a role for me, okay, which was like a flexible role जहाँ पे मुझे एक दिन आना था ऑफिस, और whenever there were events or something like that. So I was like things are working in my favor. So I mean I continued. In fact even my second maternity. So I have never, gone on a leave during my maternity, post-maternity as well. I've been working continuously for like 16 years. And touch wood again, I am blessed, to have such people working with me, my subordinates, my colleagues, my managers, my family. So I think it's all, it's the environment you create for yourself. It's all within you. Yes. Like I said, right? Go with the flow. Keep growing, and everything will fall in place. Okay. ಬೆಳಗಾವಿನ ಫಸ್ಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಆದ ವೇಣುಧ್ವನಿ 90.4 FM ಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ. ನಾನು ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕೇಳುಗರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನೆನಪುಗಳ ಮಾತು ಮಧುರ. इन दी एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि हमारे जो लिसनर्स है, स्पेशली द फीमेल लिसनर्स, क्योंकि ये वुमेन्स डे स्पेशल शो है, तो आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? Sure. So one message, in fact, these are something that, are key takeaways for me every time. Whenever I go for talks, I tell everyone, because these have worked for me. One is having a hobby is very important, because that gives you me time, apne liye time deta hai. Apart from your usual work, having a hobby is important. Second is being confident. Just be confident with yourself. I mean, you are you. Nobody can play your role. Third is having a strong support system, like I've been calling out during the interview. It's very important you identify your support system, because, at times where you need that support, your support system will fill in for you. Be it your family, your friends, your relatives, can be anyone, but identify your support system. Fourth is awareness. Be aware about what is happening, what you want to do. Just be aware of things that will, help you develop and, be up to speed. And yeah, so I think these have worked for me, and I'm sure these will work for everyone if, you take these takeaways and use them. That's so nice. Thank you so much, कैंडिडा. आपके साथ बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, एंड आई एम श्योर हमारे लिसनर्स को भी बहुत अच्छा लगा होगा, और आपकी बातों से वो काफी कुछ सीख पाएंगे. कार्येषु दासी, करणेषु मंत्री, भोजेषु माता, शयनेषु रंभा, रूपे च लक्ष्मी, क्षमया धरित्री. इसी के साथ आज का शो यहीं पर खत्म होता है. जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, अपनी ऑनलाइन जिंदगी से थोड़ा सा ऑफलाइन वक्त निकालिए, और जैसे कैंडिडा ने कहा, जस्ट गो विद द फ्लो एंड बी कॉन्फिडेंट. ये हमेशा याद रखना. बाय बाय एंड टेक केयर.